Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that index was up by 84 points and it has almost closed at 18,400 levels. So what we is observing for the last 35 trading session, index is moving up and we are almost gained 10% from that swing low from the 20th March. And that the lowest point was 16,850 levels. So it has been a one-way rally for the Nifty for the last couple of days, and Nifty is heading higher. So we are maintaining a positive view. We maintain that we should be heading close to 18,600, 18,800. So we believe this would be the higher side target. Lower side, 18,200 is the base. So as long as 18,200 levels are held, the bias will remain positive. And only in near future, if 17,800 levels are broken, then we change our directional view. So as long as 18,000 levels are held, even 17,800 levels are held, the bias will stay positive and decline should be viewed as a buying opportunity. So in yesterday, real estate, FMCG and PSU banks and private banks, even auto was a sector which contributed to this rally. Whereas little bit sidelines were seen in the oil and gas and pharma space. So there are many stocks which are trading near 52-week high. There are stocks like Titan, Tata Motors, Colgate, IDFC First, Polycab, Navin Fluoro, many more. There are many stocks which are trading near 52-week high. So this is the sign when the index do make the new all-time high levels. So we are quite positive on the market. Coming to Bank Nifty, so Bank Nifty has retested all-time high level of 44,151 yesterday. So Bank Nifty was up by 278 points and it's closed at 44,072 level. So I believe that Bank Nifty is heading higher. The immediate target of 45,000 on the Bank Nifty looks very promising, and gradually 46,000, 46,500 should be the further upside in the Bank Nifty. So for the monthly expiry, I won't be surprised if we see the Nifty closing above 18,500 and Bank Nifty closing near 45,000 level. Both the indices, we are having a positive view. Decline should be viewed as a buying opportunity. Coming to derivatives report, Nifty futures has seen a long build up to the tune of 2.27%. The PCR has seen an uptick from 1.24 to 1.35, which is positive. The major this addition, open interest addition was seen in the 18,400 and 18,650 call option. So from the derivatives point of view, this will be the resistance, and the lower side 18,300, 18,400 put option. So this will be the support. Bank Nifty has also seen a additional long built up to the tune of 7.03%. The put call ratio has also gained from 1.29 to 1.42 ratio, which is positive. The major additions in the put front was seen at 44,000 and 43,500 put option. So that will be the support. On the call front, 44,100 and 44,500 call option. So that will be the resistance. And the best part in yesterday's session was during the in the index future, they have FS almost covered all their short positions. Yesterday they went long index future close to 14,000 contract, and eventually the net short position is only now minus 392 contracts. So this is quite positive. The long short ratio is at 50%. So in the near term, whenever this net position comes to 10, 15,000 contract, that will be a huge sign when they will be also adding a long position in the market. So net overall the bias is positive. We should be any correction in the market or even intraday correction should be viewed as a buying opportunity is what I believe. So bias for the day remain positive. So that's all from mine. I'll hand over to Devang sir for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh sir. Good morning all. So a couple of fundamental news. One is PVR. So PVR has reported numbers, and numbers were, not up to the mark because there were very few blockbusters this quarter. And the EBITDA was also kind of a break even, and they are still struggling to make healthy profits.
because of poor performance on the box office side. Uh, in terms of net profit, the net profit stood at 2743 million, a loss of 2743 million. There were a couple of one-offs, which is around 108 million due to shutting of cinemas, 105 million due to shutting of 50 cinemas in 6 months, 54 million due to accelerated depreciation, and 1334 million due to adoption of new tax regime. So adjusted for this, PAT loss would be 1250 million. The company is confident of having 150 to 175 screen additions, mostly in South. And the company expects Hindi and Bollywood to do well, which will boost occupancy in coming quarters. Hence, we remain positive on the stock. There is a call at 12 o'clock, and post that we'll update it on it more. In terms of Ami Organics gave a good set of numbers. High revenue was led by volume rather than price realization, as the price have corrected a lot. Management also mentioned that if the price would have been a bit better, it would have been contributed 2 to 3% more to the top line. Revenue from operations grew by 29.8% YOY, and sequential also was healthy. The company has consistent growth rate of 20 to 25%, and EBITDA margin for the year remained flat. Company has guided that in the coming quarters, there would be at least 100 to 150 BPS improvement in margins overall. So overall, we have a positive view on the stock, and we expect the stock to do well. In terms of Persistent System has appointed Gurvinder Sinha Sani as the Chief Marketing Officer. He was previously associated with Wipro as Vice President and has over 20 years of experience. This bodes well for Persistent, as Gurvinder's experience will help Persistent increase its brand presence in and driving growth. In terms of Astral reported revenue of 8.31% YOY growth, 1506.2 crores. EBITDA was up 45.8%. EBITDA margin at 20.64 versus 15.33%. And net profit was up 43.1%. Overall, the company reported a healthy set of numbers, and we have a positive view on the stock. In terms of PBCL, revenue was up 12.72%. EBITDA is up 36.84%, and EBITDA margin is up 13% versus 11%. And net profit is also up 15%. The stock is at a attractive valuation, and hence we have a positive view on the stock. In terms of JK Paper is going to declare its Q4 FY23 results. Secondly, on SJS, so SJS reported its Q4 numbers, and it was positive yesterday in terms of stock, and Q4 numbers are also positive. So revenue for the quarter was up 2.4% YOY, 17% YOY growth in PV segment. EBITDA margin was up 24.8%. During the quarter, company added new customers and also won orders from existing customers, M&M, Maruti Suzuki, TVS, and Royal Enfield. We have a positive view, and the call is scheduled today at 11. Post that, we'll update you on more. That's it from my end. Over to you, Hitin. Yeah, thank you, sir. So starting with the first news for today, which is about HDFC Bank. SEBI has granted approval for the proposed change in control of HDFC Capital Advisors, which is a subsidiary of HDFC and a co-investment portfolio manager, pursuant to proposed composite scheme of amalgamation for the amalgamation of HDFC with HDFC Bank. The proposed amalgamation is subject to receipt of final approvals from SEBI in respect of change in control of certain subsidiaries of HDFC. The next news is about Adani Group, where SEBI in a filing said that it has approached 11 overseas regulators for information relating to whether the Adani Group has violated any norms regarding its publicly available shares. The Supreme Court is hearing an appeal from SEBI to give it an additional 6 months to complete its probe into the Adani Group. The probe comes after US-based short-selling Hindenburg Research in Jan raised several governance concerns around Mr. Gautam Adani's group and alleged improper use of tax havens and stock manipulation by ports to energy conglomerate. The group has denied all the allegations though. The next news is about Vedanta, where the company on Monday announced appointment of Sonal Srivastava as its Chief Financial Officer
with effect from June 1st, 2023. A bachelor's in chemical engineering from BIT, Sindri, and an MBA from Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies. She comes with over 26 years of financial leadership experience across sectors. Srivastava joins Vedanta from Holcim Group, where she worked as a CFO for Asia Pacific, Middle East, and Africa operations. The next news is related to Reliance Jio, where Mr. Mukesh Ambani's streaming platform Jio Cinema announced premium pricing of rupees 999 a year, which is around $12, which is its first step to move away from the free content model to fight global rivals such as Netflix and Disney in the country. The move comes weeks after the Reliance Viacom 18 struck a content deal with Warner Bros. Jio Cinema has become popular for showing the IPL cricket tournament on the platform for free in the ongoing season. The new pricing, according to the website, is only for the premium content, while the matches should continue to stream for free. Coming to the next news, that is results of Berger Paints. The paint manufacturing company has recorded a nearly 16% year-on-year decline in consolidated profit at rupees 185.7 crores for the quarter ended March FY23, which was impacted by a fall in operating margin performance. Revenue from operations for the quarter at rupees 2,443.6 crore grew by 11.7% over a year ago period. The next results are of Coromandel International, where the fertilizer company has recorded a 15% year-on-year decline in its consolidated profit at rupees 246.44 crores for the March quarter. It was dented by contraction in operating profit margin. Revenue from operations remained strong, rising by 29.5% to rupees 5,476 crores as compared to the year ago period. The next results are of Pfizer, where the biopharmaceutical company has recorded a 3% year-on-year growth in profit at rupees 129.65 crores for the March quarter. And the revenue from operations during the same period grew by 4.2% to rupees 572.64 crores. At the operating level, EBITDA increased by 10% to rupees 181.9 crore with margin expansion of 170 bps to 31.8% as compared to the same period last year. The next results are of NSE, where National Stock Exchange of India clocked a net profit of rupees 2,067 crores in the fourth quarter of fiscal year 2022-23, which is 31% higher as against rupees 1,580 crore reported in the year ago period. As per the consolidated results declared by the company on 15 May, the consolidated income from operations stood at rupees 3,453 crores for the quarter under review, which was up by 31% year on year. The stock exchange said that on full year basis, the income from operations came in at rupees 11,856 crores as compared to rupees 8,313 crores in the preceding fiscal year. The board has recommended a dividend of rupees 80 per share for the year ending FY 2023. The final results are of Asahi India, where net sales came at rupees 1,072.37 crore in the March 2023 quarter, which was up by 13.64% from rupees 943.64 crores in March 2022. Quarterly net profit at rupees 68.92 crores in March 23 is down by 46.919% from rupees 128.08 crores in March 22. EBITDA stands at rupees 175.35 crores in March 23, which is down by 30.06% from rupees 250.72 crores as compared to last year. So this was all from my side. Now handing it over to Shitija ma'am. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग की कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। फर्स्ट अपडेट है पीवीआर के ऊपर। पीवीआर के नंबर्स कम आए थे। रेवेन्यू जो है वो 11,432 मिलियन है। एडजस्टेड ईबिटा प्रॉफिट है 54 मिलियन। नेट प्रॉफिट है 2,743 मिलियन। करंटली जो करंट रिजल्ट है उसमें कपल ऑफ लाइक 108 मिलियन उनका शटिंग सिनेमा है। 105 जो है ड्यू टू शटिंग
50 सिनेमाज ओवर लास्ट 6 मंथ्स में हुए उसके कारण, और 54 मिलियन है उनका जो एस्टिमेटेड डिप्रिसिएशन था, और 1334 मिलियन है जो एडॉप्शन ऑफ न्यू टैक्स रेजिम उसके कारण था। तो उनका जो एडजस्टेड पैट है लॉस वो अराउंड 1250 मिलियन होगा। कंपनी कॉन्फिडेंट है उनका 150 से लेके 175 स्क्रीन एडिशन करेंगी मोस्टली साउथ रीजन में, और कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि हिंदी और हॉलीवुड है अभी अच्छा करेंगे, और ये बूस्ट ऑक्यूपेंसी जो है कमिंग क्वार्टर में उसके ऊपर अनुमान देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट अपडेट है अमी ऑर्गेनिक्स के ऊपर। अमी ऑर्गेनिक्स है उनके नंबर्स काफी अच्छा रहते हैं, रेवेन्यू जो है वो अच्छा है, वॉल्यूम से प्राइस जो रियलाइजेशन है वो करेक्टेड हुआ। मैनेजमेंट ने मेंशन किया है कि जो प्राइस है वो भी मतलब बेटर होगा और कंट्रीब्यूट करेगी ओवरऑल 2 to 3% मोर टू टॉप लाइन जो है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये क्वार्टर का 29.8% ईयर ऑन ईयर 1864 मिलियन। सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रो हुआ है 22.3% से। कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट है 20 to 25%, और ये कंपनी का एम है कि ये रेट को वो मेंटेन करेंगे। इबिटा मार्जिन है ईयर के लिए ईयर ऑन ईयर हम लोग देखें तो फ्लैट है 19.9, और इबिटा मार्जिन जो है वो 20.5% है। कंपनी ने गाइडेड किया कि वो कमिंग क्वार्टर में एटलीस्ट 100 से 150 बेसिस मार्जिन इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओवरऑल पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स से, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी। देन नेक्स्ट अपडेट है परसिस्टेंट के ऊपर। परसिस्टेंट सिस्टम है उन्होंने अपॉइंट किया है गुरविंद्र साहनी को एज ए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। प्रीवियसली ये एसोसिएटेड थे विप्रो के साथ एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और उनको मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छा होगा। देन नेक्स्ट अपडेट है एस्ट्रल के ऊपर। एस्ट्रल के नंबर्स आए थे, रेवेन्यू है वो अप है 8.31% से 1506.2 करोड़, और एबिटा है वो भी अप है 45.87% से 311 करोड़। एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट है वो 43.1% से इंक्रीज होकर 206.2 करोड़ का है। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया 2.25 पर शेयर ये फिजिकल एंड में। देन पीसीबीएल के भी नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी अच्छे आए थे। रेवेन्यू जो है वो 12.72% से इंक्रीज होकर 1373.81 करोड़ रिपोर्ट किया। इबिटा भी अप आया, इबिटा मार्जिन भी काफी अच्छा है। नेट प्रॉफिट जो है 15.88% से इंक्रीज होकर 102.28 करोड़ का रिपोर्ट किया है। देन नेक्स्ट अपडेट है एसजीएस इंटरप्राइजेस के भी नंबर्स आए थे। कंपनी ने कल नंबर्स रिपोर्ट किया। रेवेन्यू क्वार्टर का अप है 2.4% ईयर ऑन ईयर, 17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है पीवी सेगमेंट में, और ये लार्जली ऑफसेट है जो डिक्लाइन हुआ है टू व्हीलर और कंज्यूमर सेगमेंट में। इबिटा मार्जिन 24.8 कंपनी ने रिपोर्ट किया है, और नेट प्रॉफिट है वो फ्लैट है अराउंड 15 करोड़ का। मार्जिन जो है वो 14.4% है। ये क्वार्टर में कंपनी ने ऐड किए न्यू कस्टमर्स, और जो लेटर में मेडिकल इक्विपमेंट सेगमेंट है, और उनको फर्स्ट ऑर्डर मिला है सैमसंग टीवी सेगमेंट से। ऑल्सो कंपनी ने न्यू ऑर्डर्स एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स है मैंने मारुति सुजुकी टीवीएस और उनसे भी ऑर्डर मिले हैं। कंपनी का कॉन कॉल है, उसके बाद हम लोग डिटेल नोट रिलीज करेंगे। देन नेक्स्ट अपडेट है एचडीएफसी बैंक के ऊपर। सेबी ने ग्रांट किया उनका जो अप्रूवल है प्रपोज का जो चेंज इन कंट्रोल एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजरी जो कंपनी है सब्सिडरी एचडीएफसी एंड को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर, उनका जो प्रपोज कंपोजिट स्कीम था अमालगेशन का, और अमालगेशन ऑफ एचडीएफसी विद एचडीएफसी बैंक का, उसके लिए सेबी ने अप्रूवल ग्रांट किया है। अदानी ग्रुप है, सेबी ने पहले में बोला है कि अप्रोच है उनका 11 ओवरसीज रेगुलेटरी है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग, उसमें अदानी ग्रुप का जो वायलेंट हुआ नॉर्म्स रिगार्डिंग पब्लिकली अवेलेबल शेयर्स के कारण, तो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग का जो अपील है वो सेबी ने दिया गया है एडिशनल 6 मंथ्स उसका जो कंप्लीट है ये प्रॉब्लम उनको अदानी ग्रुप के लिए। देन वेदांता जो कंपनी है उन्होंने मंडे अनाउंस किया कि वो अपॉइंट कर रहे हैं सोनी श्रीवास्तव को एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और ये इफेक्टिव होगा June 1, 2023 से।
उनको उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और MBA जपान बाजार इंस्टीट्यूट से किया है। ओवरऑल उनको 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट अपडेट है रिलायंस जियो के ऊपर। रिलायंस जियो स्ट्रीमिंग करेंगे प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा। उन्होंने अनाउंस किया कि प्रीमियम जो प्राइसिंग है वो 999 है इंडियन रुपीस में ईयर के लिए। ये फर्स्ट स्टेप है उनका जो फ्री कंटेंट है उससे मूव अवे होने का। और फाइट मतलब वो ग्लोबली फाइट करेंगे रेवल्स जैसे कि उसमें नेटफ्लिक्स है, डिज्नी है उनके साथ। और कंपनी ने कमिंग वीक में अनाउंस किया कि रिलायंस वीडियोकॉम 18 है वो स्टॉक कंटेंट जो डील है कॉर्नर ब्रोस एंड जियो सिनेमा एक पॉपुलर शो हो रहा है। मतलब उनका जो शो चल रहा है अभी IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का, उसमें भी जो प्लेटफॉर्म है प्री ऑनगोइंग सीजन का और उसका भी न्यू प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू वेबसाइट पे जल्दी वो प्रीमियम कंटेंट पे आएगा और मैचेस कंटिन्यू होगी। स्ट्रीमिंग जो है वो फ्री में ही। देन बजाज पेन के नंबर्स आए थे। मैन्युफैक्चरिंग जो पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने रिपोर्ट की है 16% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन। कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है वो 185.7 करोड़ का है। बेसिकली जो इम्पैक्ट देखा गया है वो फॉलिंग ऑपरेटिंग मार्जिन परफॉर्मेंस के कारण है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ये क्वार्टर का 2443.6 करोड़, वो ग्रो हुआ है 11.7% से। कोरोमंडल इंटरनेशनल जो कंपनी है फर्टिलाइजर, उन्होंने भी नंबर्स रिपोर्ट किए। कंपनी ने 15% की ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन रिपोर्ट किया है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है 246.44 करोड़ है। उनका ये कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, वो राइज हुआ है 29.5% से 5476 करोड़ का। देन नेक्स्ट अपडेट है फाइजर के ऊपर। कंपनी ने रिपोर्ट किया 3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, प्रॉफिट है 129.65 करोड़। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ग्रो हुआ है 4.2%, 572.64 करोड़। ओवरऑल उनका जो EBITDA है वो इंक्रीज हुआ है 10% से और जो मार्जिन एक्सपांशन है वो 170 बेसिस है 31.8% से है हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करें। देन NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया 2067 करोड़ फोर्थ क्वार्टर में और ये 31% हाइयर है। हम लोग कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के ईयर से। उनका जो कंसोलिडेटेड इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है वो 3453 करोड़ का है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 80 रुपीज पर शेयर। देन आशी इंडिया जो है उनके भी नंबर्स आए थे। नेट सेल्स 1072.37 करोड़ का रिपोर्ट किया है जो अराउंड 13.64 से अप है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है 68.92 करोड़ का जो डाउन है 46% से। EBITDA भी अभी 175.35 करोड़ है। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.